Very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as you can see the thumbnail, and it says the Hindu analysis of 19th January. So 11 a.m. in the morning we come up with the Hindu analysis. I discuss in both the language, that is English as well as in Hindi. So आज जो है 19 जनवरी है and that is Thursday, and we are here with today's the Hindu analysis. So आज की हम लोग the Hindu analysis जानते हैं. Now, first, the most important news of today is this one: Tripura, Meghalaya, and Nagaland to vote in February. So there will be a legislative assembly elections in February this year. Yesterday, Election Commission of India has announced it. ठीक है, कल Election Commission of India ने announce किया कि फरवरी में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होंगे. ठीक है, यानी विधानसभा के चुनाव होंगे. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. सो इफ आई एम ऑडिबल, जस्ट राइट इन द कमेंट्स यस सर यू आर ऑडिबल. Then ये वाली the political article, so I'm skipping it. Then this we will be discussing. Did not suggest changing the name of Tamil Nadu, says Governor of Tamil Nadu, Mr. R.N. Ravi. So we will be discussing about it also. Now, so first let's discuss about it. Election Commission of India said yesterday, the Chief Election Commissioner did a press conference and said that Tripura, Meghalaya and Nagaland will be voting in February this year. Counting in all the three states will be held on 2nd March. Election Commission also announces by-poll in 6 assembly seats in 5 states and Lakshadweep Lok Sabha constituency on February 27. तो अब हम लोग ये जानते हैं. पहली बात ये जान लेते हैं. First question is, please tell me who is the Chief Election Commissioner of India. This is a question. Who is Chief Election Commissioner of India? Please answer it in the live chat. I am waiting for your answers. ठीक है. अब देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा का चुनाव होगा. विधानसभा मींस, आई होप यू आर अवेयर ऑफ विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली. So the people who are elected, they are called as MLA, member of legislative assembly, and they choose actually the chief minister of a state. So whosoever has majority in that state, whosoever has majority supporters of MLA or majority party, as far as number of MLAs are concerned, they will have their own chief minister. Okay. दूसरा चीज ये है कि they are saying कि there will be by-polls in 6 assembly states. Okay, 6 assembly seats. By-polls means mid-poll. अब ये क्या होता है mid-poll? तो जैसे for example, let's say, just let me tell you. जैसे for example, someone got elected in 2021 and he is supposed to stay for 2026. Now, because of some reason in 2023, he died or he was disqualified. So then for the rest of the 3-year term, there will be an election that's called as by-poll election. ठीक है, यानी जैसे 5 साल के लिए चुना जाता है ना, विधायक हुआ या सांसद हुआ, बीच में 5 साल के बीच में उनकी मौत हो गई या उनको हटा दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया किसी भी कारण से, तो जो रेस्ट ऑफ द टेन्योर बचा है 2-3 साल का, उसके लिए बाई-पोल इलेक्शन होता है. राइट. So that is what it is. So अभी आपको पता होगा, recently we had discussed that Lakshadweep MP, लोकसभा MP, Mr. Faisal actually was convicted by the court and he was jailed for 10 years, and because of which he has been disqualified as an MP of Lok Sabha. Right. So Lok Sabha elections is going to happen next year, but for more than 1 year the seat will be vacant, so there will be an election for the almost 1 year tenure. ठीक है, तो अगले साल ना लोकसभा का इलेक्शन होगा, लेकिन चूंकि 1 साल से ज्यादा का भी समय भी, ये बहुत समय है, तो उनके लिए उनकी जगह पर कोई और अब इलेक्शन होगा, बाई-पोल इलेक्शन. सो सिमिलरली 6 assembly seats in 5 states there will be election. Yes, Mr. Rajiv Kumar, very good. Mr. Rajiv Kumar is the Chief Election Commissioner of India. Yes, right. राजीव कुमार साहब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के. ओके, नाउ लेट मी शो यू वेयर एग्जैक्टली इट इज. कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड. सो दीज आर द मेन स्टेट्स जहां जहां इलेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट में. तो दिस इज मेघालय, दिस इज नागालैंड and this is Tripura. Okay, Tripura, Meghalaya, Nagaland. In these 3 elections, there will be legislative assembly elections where new chief minister will be there and all. So the elections will happen, and let's see whether there will be a replacement of a chief minister or the same will continue. So Nagaland, Meghalaya और त्रिपुरा में चुनाव होगा. Yes. Now, so you can see it here. So these are the dates. The dates याद ही रखना. So 16 फरवरी को elections will be there. Last day of nomination, filing nominations. If you want to fight election, you have to file nomination, है ना.
काउंटिंग डे तीनों स्टेट का 2 मार्च को है, यू कैन सी इट है। बाकी बाई पोल्स कहां कहां हो रहे हैं, मिड टर्म पोल्स भी इसको कहते हैं, मिड टर्म पोल्स, मिड टर्म पोल्स और मिड टर्म इलेक्शंस, ठीक है। So this is happening in Lakshadweep Union Territory for member of parliament. Why? Because actually the member of parliament of Lakshadweep has been convicted of attempt to murder. तो इसलिए उनको disqualify कर दिया गया, he has been disqualified. So these are the other 6 MLA constituency जहां election होगा. Maybe some people might have died or maybe disqualified or some other reason he or she might have resigned. किसी भी कारण से सीट खाली हो गई होगी, चाहे तो डेथ हो गया होगा, चाहे तो इस्तीफा दे दिया गया होगा या डिस्क्वालीफाई कर गए होंगे। तो दीज आर द प्लेसेस है ना वेयर एक एक सीट पर है ना, यहाँ A1 1 1 1, सो दीज आर द 6 सीट्स वेयर द इलेक्शंस विल बी हैपनिंग। सो मेन जो है ये 3 स्टेट्स में होगा, ठीक है। सो द एंटायर असेंबली इलेक्शंस विल बी हैपनिंग इन त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड। ओके गाइस, वन मोर थिंग, सिंस all the 3 states are in news, so I want to know the capital city of these 3 states. Because I know many people actually they do not have much idea about the capital cities of the states in northeastern region, and that is why I am giving this question. Read the question carefully and then answer it. पढ़िए आंसर सवाल को और आंसर कीजिए। And there is a request, everyone please press the like button guys. We are seeing 12 likes, 17 is watching, so सबको like button press कर दो एक बार, and share this video and subscribe to our channel also. नीचे subscribe का बटन होगा, उसको भी दबा दो। Yes. Okay, so what is the right answer? देखो I am asking respectively, यानी sequence wise आपको बताना है, त्रिपुरा, मेघालय and नागालैंड respectively. Respectively means it should be in the sequence, okay? Like first is Tripura, then first there should be capital of Tripura, then Meghalaya and then Nagaland. Yes, Priya Chavan, KS, Surendra, Shahnur Alam, Payal, Tawar, Shah Alam, Shahan Alam, Zoya Khan, Jagsir Singh. Yes, no, it's B. हाँ देखो, त्रिपुरा's capital is अगरतला, तो ठीक है, let me write, त्रिपुरा's capital is अगरतला, मेघालय's capital is Shillong, very famous, then Nagaland's capital is Kohima. So the right answer is option B. Now option A, some people were saying option A, but that's not correct because these are actually exchanged, है ना। I have used the word respectively, तो मैंने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है, तो आपको उसी पैटर्न में बताना होगा। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मेघालय की शिलोंग है और नागालैंड की कोहिमा है। सो लेट मी शो यू, आपने देखा भी होगा, सो लेट मी शो यू हियर। देखो यहाँ पे लिखा है मेघालय, दिस इज मेघालय, यहीं पे कहीं पे शिलोंग होगा, यहाँ पे विजिबल नहीं। त्रिपुरा की देखो अगरतला लिखा है, नागालैंड का भी यहीं पे कहीं पे कोहिमा है, इट इज नॉट शोइंग। बैटल ऑफ कोहिमा काफी फेमस है हिस्ट्री में, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। ये सब बेसिक चीजें हैं, these are the basic capitals, you should be knowing it. So B is the right answer. Yes, Azad, Netaji, Hafiz Ibrahim, you all are right. Now let's move on to another topic on the first page. Did not suggest changing the name of Tamil Nadu, says Governor of Tamil Nadu, Mr. R.N. Ravi. देखो, recently we had seen some actually issues with the Governor, Mr. R.N. Ravi, and the Chief Minister of Tamil Nadu and all. So R.N. Ravi साहब और तमिलनाडु के सीएम में कुछ टसल वगैरह हो गया था। Now we had discussed it in the past classes, so just search BYJU'S CLAT, go to our YouTube channel, subscribe to it, इस पर क्लिक करना, you will reach here, there is a playlist button here, इस पर क्लिक करना, you click here view full playlist, इस पर क्लिक करो, you will get these old videos, है ना। इसमें please go and watch all the previous videos if you have not watched it. We have discussed many important things, जैसे for example Jallikattu, which we will be discussing even today also. Then we had discussed about R.N. Ravi, the Tamil Nadu governor issue. We had discussed in the past. So please go and watch those videos अगर आपने नहीं देखा है. Now let's move on to the next one. There is a question for you. ये सब question बहुत famous है. Who among the following is the Attorney General of India? Your options are Vikas Singh, Dushyant Dave, R. Venkat Ramani, Mr. Prashant Bhushan, Mr. Tushar Mehta. So what is the right answer? Attorney General of India कौन है? Mr. विकास सिंह है, Mr. दुष्यंत दवे है, Mr. R. वेंकट रमानी है, Mr. प्रशांत भूषण है या Mr. तुषार मेहता है? So I hope you are aware. इस तरह क्वेश्चन पूछते भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन AILET they asked the question की which of the following is not a constitutional post, which of the following is a statutory post. So please remember, Attorney General of India is mentioned in Constitution. Please go and find out which article of Indian Constitution talks about Attorney General of India.
Yes, very good. The right answer is option C. Shahnoor, Surendra, Hafiz Ibrahim, Zoya Khan, Shan Alam, Priya, Rashmikant, Amolya, Jagsir, you all are right. And can anyone tell me, out of these 5 options, who is the Solicitor General of India? इनमें से Solicitor General कौन है? Anyone? I'm waiting for the answers. Attorney General of India is the senior most lawyer of the central government, and yes, Mr. R. Venkat Ramani is the Attorney General of India. Yes, Rashmikant Oja, very good. And Mr. Tushar Mehta is actually the Solicitor General of India. इस क्वेश्चन का आंसर C है और Solicitor General का आंसर E होगा, Mr. Tushar Mehta, because he was in the news. On the first page, there is an article, refer Lieutenant Governor issue to 7-judge bench, says Center. So central government lawyer, Mr. Tushar Mehta. So he is Mr. Tushar Mehta, the Solicitor General of India. He actually requested the Supreme Court to send this to a larger bench. So a 5-judge bench is hearing this case, but he requested that there should be a bigger bench, 7-judge bench should be there and all. Uska reason I am not going in detail. So what is the issue actually? So the Lieutenant Governor versus you can say the Chief Minister or the government of Delhi issues. That who should be handling the services. Services means who should be transferring IAS, IPS and all in Delhi. Okay. So those officers, DANIX officers, DANIX and DANIPS officers are also there. तो ये सब ऑफिसर्स को ट्रांसफर कौन करेंगे, आईएएस आईपीएस डायनिक्स डैनिप्स को, हु विल बी ट्रांसफरिंग इट, सो वेदर द लेफ्टिनेंट गवर्नर और द चीफ मिनिस्टर. ठीक है. सो एक्चुअली दिस एक्चुअली is been in the news. The petition is going, I mean the hearing is going in the 5-judge bench led by the Chief Justice of India, but actually the central government lawyer Mr. Tushar Mehta, the Solicitor General of India, has requested to send it to a larger bench. ठीक है. तो केंद्र सरकार के सबसे सेकंड सीनियर मोस्ट लॉयर जो है सॉलिसिटर जनरल सेकंड सीनियर मोस्ट लॉयर होते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 7 जज बेंच को ये फैसला भेज देना चाहिए, उनको हियर करना चाहिए, 5 जज को नहीं. ठीक है. सो देयर इज अ रीजन एंड वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल. खैर, अटॉर्नी जनरल इज मेंशन इन 76 जोया खान. यस, 76 में ये मेंशन है. ओके, बिफोर मूविंग ऑन गाइस, AILET All India rank 18, Anika Sehgal, she is actually from our batches, so she has got 18th rank, and next time we will be showing your image also here. And we are providing a course that's called as CLAT 2024 course. The exam is in December. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 mock tests would be there. And if you have any query, you can call on this number. इस number पे call कर सकते हो 9538895678 पर. And if you want this course at a cheaper rate, अगर आपको कम दाम पे कोर्स चाहिए, so we are providing a scholarship of up to 90%. And on 22nd January, 3 दिन बचा हुआ है, ठीक है, on 22nd January at 11 AM in the morning, we will be having a scholarship test. ठीक है. So how to register? There is a link given in the description of this video. नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. And if you have any problem, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो. If you have any problem in registering it, so the link is given in the description. But if you have any problem, then you can call on this number 95388895678. Okay. Yes, Amolya Raj, call on this number 95388895678. Or what you do is, देखो इस पर जाओ, बायजूस एग्जाम प्रेप, डाउनलोड द ऐप, बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करो. ठीक है. Go to CLAT and law section. And once you open the app, if you go down, there is a button called Talk to Counselor. ठीक है. जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, CLAT और लॉ सेक्शन में जाओगे, तो नीचे आप जाओगे ना स्वाइप करके. When you swipe down and at the bottom, you will see Talk to Counselor button there. So click on it and then you can talk to them. ठीक है. Is it clear? Or if you have any problem, please leave your phone number in the live chat. आप अपना नंबर डाल दो, so our team will approach you. Okay? यहाँ पे नंबर लिख दो, phone number, and they will be approaching you. Okay. Now let's talk about editorials. So these are the top four editorials. I mean this one, this one, this one, and this one. I have already told you these are actually author based. It means it represents the opinion of the authors. The name of the authors are given, and these two are authorless. So actually it represents the opinion of the Hindu editors. Okay. Is it clear? Yes. Now let's start with these top two. Admonishments that endanger the constitution. Now this article is basically related with
in the context of actually a comment of Vice President Mr. Jagdeep Dhankar. So he actually criticized the Keshavananda Bharati case judgment. Keshavananda Bharati case judgment. Yes, Solicitor General is not a constitutional post. Yes, Zoya Khan, you're right. Huh? So it's a 13-judge bench order, and I have explained in the paid classes कि क्या था basic structure doctrine. So the Keshavananda Bharati case came up with basic structure doctrine, that basic structure of the constitution cannot be changed even by the parliament. But this was criticized by Mr. Jagdeep Dhankar. तो जो basic structure है बहुत सारे constitution का, उसको parliament भी संविधान संशोधन के बावजूद भी change नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती केस में. Now he is actually criticizing the opinion of Mr. Jagdeep Dhankar in this article. Okay, let me tell you, whatever is written, I am just explaining it. These are not my opinions. I do not give my opinion. ठीक है, ये मेरा opinion नहीं है, मैं सिर्फ explain कर रहा हूँ. ठीक है. Now he is saying कि in actually 1973 the judgment came, and so if you add 50 years on 24th April 1973, actually 2023 it will become the 50 years. 50 साल हो जाएगा. The judgment is widely recognized as a milestone in India's history in holding Parliament's power to amend constitution, etc. and all. And so the idea of basic structure was brought, that there are some limitations to the power of Parliament. So Parliament cannot amend anything whatever it wants, but it has some restrictions and all. Okay. So that is why he is saying but last week Vice President Jagdeep Dhankar launched a salvo of attacks on Supreme Court and all. Okay, so that is what is saying. Then Union Minister Mr. Kiran Rijiju actually have repeatedly doubted the court's judgment in 2015. Now एक और जो है NJAC पर अटैक हुआ. So National Judicial Appointment Commission, which was a result of 99th constitutional amendment, है ना? It was passed, but in 2015 Supreme Court struck down because of violation of independence of judiciary. NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया था, कहा था कि नहीं कॉलेजियम सिस्टम ही रहेगा अपॉइंटमेंट का, NJAC नहीं रहेगा, इसलिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है. ओके, तो इसको भी किरण रिजिजू, मिस्टर किरण रिजिजू, द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर जगदीप धनखड़ हैज क्रिटिसाइज्ड इट. तो दोनों ने क्रिटिसाइज किया था. So Mr. Dhankar claimed that striking down NJAC had no parallels in democratic history and all. So that is what he had said. जब वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि NJAC को हटाना, ऐसा कहीं और डेमोक्रेसी में नहीं देखा जाता है कि जो पार्लियामेंट ने पास किया उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट ही सेड एंड ऑल अबाउट इट. ठीक है. To be shared, genuine criticism of both the collegium functioning and court's judgment upholding the body's legality ought to be welcomed. हाँ. And the collegium, I hope you are aware. Let's say, for example, for an appointment of a Supreme Court judge, 5 senior most judge of Supreme Court, actually, Supreme Court judge decides, है ना, who should be the next judge, है ना. तो 5, तो उसको हम लोग कहते हैं judges appointing judges. तो 5 senior most judges, उसमें including CJI also, they actually appoint the new judge of Supreme Court. So they were actually being replaced with NJAC, National Judicial Appointment Commission. There's a homework. Go and find out which were the members, which were supposed to be the members in NJAC. I will be discussing it in paid classes in detail. मैं paid classes में बताऊंगा कि NJAC क्या होता है, collegium का पूरा road beginning and all, so that it would be easy for you. Here just go and find out कि NJAC को क्यों, why Supreme Court struck it down. What was the reason? Why it was violative of independence of judiciary. क्यों Supreme Court ने कहा था कि ये independence of judiciary का violation and all. So go and read it about it. So he is actually defending, actually, he's saying actually कि the criticism and all, I mean, he is actually, he is saying कि Jagdeep Dhankar's criticism of basic structure doctrine is not correct. That is what, I mean, the Hindu journalist or the Hindu author, Mr. Surit Parsarthi, is an advocate in the High Court, Madras High Court, he has said. So now he's saying where to begin with elementary premise that India's constitution as originally adopted comprises a set of principles, etc. and all. So he's going in detail and all. इतना detail नहीं जाना है. देखो अब ये बता रहे हैं कि why basic structure was required. So he is defending the basic structure of constitution. He is saying if the parliament has the power to amend anything in the constitution, it can change whatever it wants. So even the main idea, the original idea of the constitution will be destroyed, which was made during 1950. So the parliament can pass a law. It will change the Westminster system from presidential system. Westminster system means prime ministerial form of government, है ना, या parliamentary form of government. Parliamentary form of government. So right now we are having parliamentary form of government.
So if parliament is given infinite actually powers, and if the government is in power, it has majority in both Lok Sabha and Rajya Sabha, then it can amend anything. It can actually change the entire constitution's character and all. It can change the Article 21 and many other things and all. It may remove the fundamental right or something like that. बहुत कुछ कर सकते हैं. तो वो यही बता रहे हैं. In Minerva, he is actually explaining the judgment of Supreme Court Minerva Mills case, where he said the judge said, the Supreme Court said, Parliament too is a creature of the Constitution. In fact, संविधान ही ने तो पार्लियामेंट को ही बनाया है. तो पार्लियामेंट कैसे पूरा संविधान को चेंज कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा? तो पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट हैज सम रिस्ट्रिक्शंस. हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना? So, but actually, the court found that ceased to be an authority in the constitutional sector and all. So, वही बता है कि if the parliament starts amending each and everything, then it can, the next day it will destroy the entire constitution. It will make the entire complete new constitution and all. ठीक है? So, since its judgments, the Supreme Court has identified several features that are immutable. Immutable means which cannot be changed. Which cannot be changed. ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसी चीज बताई है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है. So the basic structure that's called, like for example, the rule of law, the secularism, federalism, free and fair elections, these things cannot be changed, है ना? तो ये सब हटाया नहीं जा सकता है. ये basic structure even the parliament cannot destroy it. Okay, so that is what he is defending, the basic structure of constitution. साइड में जो आर्टिकल है वो भी मोर और लेस उसी टॉपिक पर बेस्ड है. गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स सिस्टमैटिक रिफॉर्म, नॉट द अटैकिंग जुडिशरी एंड ऑल. Because recently we have seen in fact we have seen the criticism of collegium, the NJAC. Yes, some criticism of collegium is valid, like for example there is no transparency. So what 5 judges decide, they do not reveal in the public ki how do they decide ki this should be the judge and this person should be the judge. ये decide करते तो publicly बताते नहीं है कि क्या कारण है, सिर्फ बताते हैं कि ये जो है नए जज होंगे. So these are the criticism of collegium. Yes, criticism, genuine criticism can be done. But yes, recently the law minister has written to CGI that in the appointment of the college judges, like for example, for Supreme Court judge appointment, there is a 5-judge collegium, 5 Supreme Court judge collegium, right? So the law minister requested that there should be members from government also, like Supreme Court judge appointment, there should be a central government's official. And a High Court judge appointment in collegium, there should be a state government's representative as well. ठीक है, तो उन्होंने कहा, लॉ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एक ऑफिशियल होने चाहिए, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए. बट द क्रिटिक्स हैव सेड कि नो, इट विल बी वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ओके, दैट व्हाई शुड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बी देयर इन अपॉइंटमेंट ऑफ जज? जुडिशरी शुड बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. दैट इज द क्रिटिसिज्म, काउंटर आर्गुमेंट एंड ऑल. ठीक है, फिर अगेन एनजैक के बारे में बताया गया. सो प्लीज गो एंड रीड अबाउट एनजैक. If you are from our paid classes, it's fine. I will be teaching in detail the NJAC. If you are not, please read at least. जाके पढ़ना क्लास के बाद NJAC क्या होता है and all. ठीक है? And everyone, please press the like button. We are seeing 16 likes, 26 is watching. So सबको like button press करते जाओ. Everyone, yes. हाँ, so that is what is being talked about and all. तो अब चलो और देखते हैं, इसको पढ़ लेना. Go and read about it. तो एक जो valid criticism है, वो है lack of transparency. This is a valid criticism of collegium कि there is no transparency. मतलब जो डिसीजन लिया जाता है वो 5 जजेस के द्वारा, वो पब्लिक में नहीं पता होता है कि क्या रीजन था, क्यों चूज किया गया, इनको नहीं, इनको चूज किया गया. जूनियर को कभी कभी बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट जज, उनसे और सीनियर्स होते हैं, इनको अपॉइंट नहीं किया जाता है. सो देयर आर मेनी थिंग्स. क्रिटिसिज्म इज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. दैट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म. नाउ इसमें है सेकंड हाफ में सिग्नल्स ऑफ अ स्लो रिटर्न टू पीस इन सीरिया. If you are interested, you can read it, but I think he has gone very much in detail about the peace process in Syria and all. He's a former IFS diplomat, Mr. Talmiz Ahmad. Yes, Arin, you can write it, no issue. Huh? Okay. Now, risk and rewards. Jallikattu should not incentivize risk taking by participant spectators. ठीक है? ये वाला जो है आप अपने से पढ़ सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ जल्लीकट्टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द रिसेंटली देयर वर हियरिंग्स वर हैपनिंग, है ना? देखो, आपने देखा होगा. एंड सुप्रीम कोर्ट रिजर्व द ऑर्डर फॉर एक्चुअली रिजर्व इट्स जजमेंट
मतलब रिजर्व जजमेंट का मतलब हुआ कि इट हैज हर्ड बोथ द पार्टीज एंड वेरी सून इट विल बी पासिंग एन ऑर्डर कि वेदर जल्लीकट्टू इज लीगल और नॉट। ठीक है, तो जल्लीकट्टू के पक्ष विपक्ष दोनों साइड का हियरिंग कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और जल्द ही जजमेंट आने वाला है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि पोंगल फेस्टिवल में एक्चुअली दिस टू एक्चुअली हैपेंस। व्हाट? The one is called as Jallikattu and similar is called as Manju Viratu. So these two are you can say sort of a bullfighting festival. Bullfighting very similar to which happens in Spain. लेकिन उसमें होता क्या है कि लोगों की डेथ हो जाती है. What is the other side is that the deaths happen because of it, because of course it is slightly dangerous also. And yes, you can see the death of 5 men in Tamil Nadu, in Jallikattu, in Manju Viratu and all. So is there so लोग उसकी बैन की बात करते हैं. सेकंड थिंग इज यस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी द आर्गुमेंट्स इन द पास्ट क्लासेस की फॉर एग्जांपल ऑन वन साइड देयर इज एनिमल क्रुएल्टी, so those who oppose it they say ki there is animal cruelty, those who support it they say ki this is our culture and I have a right to protect my culture under article 29. yes हाफिज इब्राहिम वेरी गुड. हाँ, तो ये दोनों जो पक्ष विपक्ष का एक्चुअली दोनों साइड का जो आर्ग्यूमेंट है. so let's see, let's wait for the judgment of supreme court. so whatever the supreme court will be seeing it, है ना. तो क्या आता है फैसला देखते हैं. तो इसी पर वो उन्होंने एडिटोरियल लिखा है. ठीक है, जस्ट हैव एन आइडिया. पोंगल इज मोस्टली इन तमिलनाडु, हाँ साउथ इंडिया. हाँ यस. नाउ द नेक्स्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड इको सेंसिटिव जोन. इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना. देखो इको सेंसिटिव जोन पर एक आर्टिकल थी. नाउ हियर द प्रोटेक्टेड एरिया, इको सेंसिटिव जोन, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीज आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया. इको सेंसिटिव जोन जैसे फॉर एग्जांपल in eco-sensitive zone there are some restrictions in development, road construction, highways etc. इस पे restrictions होता है. but in some cases these are actually violated. ठीक है, कई बार violate किया जाता है, कई बार ESZ को माना नहीं जाता है. like for example Western Ghat, many region of Western Ghat is eco-sensitive zone, but still we have seen a lot of constructions and all. so actually क्या होता है, conflict between environment versus development. इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट कई बार होता है. तो जो लोग डेवलपमेंट कराते हैं तो इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि आप जब इतना डेवलपमेंट करा रहे हैं तो इन्वायरमेंट पर असर पड़ेगा. एंड दोज हु आर सेइंग कि सपोर्टिंग इन्वायरमेंट दे से कि इफ यू आर नॉट डूइंग एनी डेवलपमेंट तो हम लोग ऐसे पीछे रह जाएंगे. तो देयर आर बोथ द आर्गुमेंट्स एक्चुअली. ओके, यस, इज इट क्लियर? हाँ, so just have an idea about it. yes. so हाँ, इसमें कुछ चीजें मेंशन है जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं पढ़ने के लिए. एक को कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, एक ये. दूसरा था पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, पीसा एक्ट, आई थिंक इन 1996. देखो यहाँ पे लिखा होगा. इस दोनों का पढ़िएगा थोड़ा सा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, Schedule Areas Act. So PESA Act and Forest Right Act, please go and read it. So these are actually to protect okay Arin, no problem. So these are actually here to protect the rights of the local people, the tribal people and all, है ना. So they are given the powers, the Gram Sabha have a lot of powers. So these are two Forest Rights Act and PESA Act. इसको थोड़ा सा पढ़िएगा जाके. On Wikipedia you will get and all. So then ESZ की उन्होंने बात की है and all. So just have an idea about it. Now fewer VIP invites, 32,000 seats for the general public at Republic Day Parade. तो ज्यादा VIPs को नहीं बुलाया जा रहा है और 32,000 लोगों को, नॉर्मल लोग जो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और रिपब्लिक डे परेड देख सकते हैं. Now since we are talking about Republic Day, this is a question for you. Who among the following would be the chief guest on the Republic Day this year? And these are options, and please the name the person also. I have just written the designation, so mark what is the correct and please tell me who is the person. Your options are President of UAE, that is United Arab Emirates, President of Guyana, President of Suriname, President of Egypt, PM of Japan. What is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. वी आर सीइंग 18 लाइक्स, 30 इज वाचिंग, सो सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. What is the right answer? And name the person also. Yes, Rashmikant, Priya Chavan, Roshni, Sujata, Zoya Khan, you all are right. President of Egypt will be the chief guest this year, यानी 26 जनवरी 2023 को, है ना.
And what is his name? उनका नाम? Yes, very good. Anadi Sahu, very good. Mr. Abdul Fattah al-Sisi is the right answer. ठीक है. Not Fumio Kishida, Surendra. Fumio Kishida is the PM of Japan. Fumio Kishida is the PM of Japan, but he is not coming. So the chief guest will be Mr. Abdul Fattah al-Sisi. ठीक है. So just have an idea. Yes, very good. Amolya, Roshni, Hafiz, Doya Khan, you all are right. Huh? Now there's a question. Since we are talking about Egypt, I will be asking some more questions. What is the capital city of Egypt? Egypt की राजधानी क्या है? Damascus, Amman, Cairo, Tripoli. What is the right answer? And once you answer it, please tell me the capital of other three cities. Other three cities are capital of which country? What is the right answer? Huh? Shanur is saying A. बाकी लोग देखो, Damascus is the capital of Syria. Amman is the capital of Jordan. Tripoli is the capital of Libya. And we are left with option C. Yes. Sujata Sarkar, Sujata Solanke, Surendra, Zoya Khan, Hafiz Ibrahim, Priya, Roshni, you all are right. So Cairo, or in Arabic they use the word Kahira. So C is the right answer. The capital city of Egypt is Cairo or Kahira. Now, since Egypt, if you read Egypt, this thing actually comes in the news. Okay, that is why I'm asking this question, and strategically very, very important. So please tell me which of the following strait or canal is under the control of Egypt? Panama Canal, Strait of Gibraltar, Strait of Malacca, Suez Canal, Strait of Bosphorus. आपको ये बताना है हाँ, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रेट या कैनाल जो है इजिप्ट के कंट्रोल में है. दिस इज वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो, एंड परहैप्स वन ऑफ द रीजन ही इज बीइंग इनवाइटेड. शायद उसलिए भी बुलाया जा रहा होगा, और भी कई सारे रीजन होगा, बट यस, वन रीजन बिकॉज इट कनेक्ट्स टू इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज. यस, वेरी गुड. अनादि साहू, रोशनी पांडा, यू आर राइट. सुएज कैनाल, एक्चुअली लास्ट ईयर सुएज कैनाल ब्लॉकेज भी हुआ था, आई थिंक 2020 में, नहीं 2021 में, मार्च में, 2 years back I would say. It was actually very much in the news. Suez Canal blockage, आपको शायद याद होगा, एक शिप जाके फंस गई थी, है ना? Yes. And it connects which two water body? These are your options. कौन से दो वाटर बॉडी को ये कनेक्ट करता है सुएज कैनाल? What is the right answer? Waiting for the answers. कुछ लोग अटेम्प्ट लिए हैं, लेकिन तब भी हम देखते हैं. Let's see. सुएज कैनाल बहुत अहमियत रखता है इंटरनेशनल रिलेशन में, या आप समझ सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड में. तो इट कनेक्ट्स टू फेमस वाटर बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, अमूल्य, राज, प्रिया, चवन, एंड इनफैक्ट समवन बिफोर आस्किंग मी हैज आंसर्ड इट. अनादि साहू, यस. मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. यस, रश्मिकांत, यू ऑल आर राइट. तो आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ से इंडिया से जाओगे ना, मान लो, लेट मी शो इट. अगर आपको यूरोप जाना है तो आप पहले ऐसे जाओगे ना, पहले ऐसे जाते थे लोग, ये ऐसे घूम के. So now you can go this shortcut. Yes, this is a shortcut. ठीक है. now तो यहां पर इजिप्ट में, यहां पर आपको सुएज कैनाल मिल जाएगा. लेट मी जूम इट. ये वाला सुएज कैनाल है, ये वाला मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है, इस दोनों को कनेक्ट करता है. ठीक है. so it connects मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी. okay, yes, so just have an idea about it. now रेड सी और कैस्पियन सी को कौन सा कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब. ठीक है. और ये तो कनेक्ट होता है, रेड सी ब्लैक सी कनेक्ट नहीं होता, रेड सी कैस्पियन सी कनेक्ट ही नहीं होता है. सो ए एंड डी कैन नॉट बी पॉसिबल. ठीक है. इसका आंसर सुएज कैनाल है, एंड इसका आंसर है बाबल मंदब. हैव यू सीन बाबल मंदब? लेट मी शो यू हियर. देखो, ये अरबियन सी है, दिस इज रेड सी, तो यहाँ पे आपको बाबल मंदब मिलेगा, जिबूटी के पास बाबल मंदब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुएज कैनाल ओपन 1816. हाँ, राइट, गुड, वेरी गुड रश्मिकांत. था. Now, report flags widening learning gaps. अब देखो, the Acer report shows that government school saw a sharp rise in enrollment for the first time in 16 years. Basic level of children has taken a hit and all. देखो, पहले क्या होता था, जनरली लोग सरकारी स्कूल से उठ करके प्राइवेट स्कूल में आते हैं, राइट? जनरली दिस हैपेंस ना, कि people move from government schools to private schools, believing that government schools is not very good quality teaching. I mean, quality-wise teaching is good in private schools and all. But this time we have seen the reverse. We have seen from private schools students moving to government schools. First time in the history of 16 years.
I'll explain why it is, but before that, there's a question for you. Acer report is released by whom? Ministry of Education, Ministry of Finance, Pratham NGO, UNDP, United Nation Development Program. अब ये बताना है कि जो एसर रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, ही नाम है एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट. सो दैट इज एसर रिपोर्ट. इट इज रिलीज बाय होम. कौन रिलीज करता है बताओ. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. We are seeing 19 likes, 30 is watching, so at least 30 plus likes should be there. Everyone, yes. Very good. Priya Chavan is right. Pratham NGO actually releases as Acer report. So you can see it here. यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा. It is released by NGO and released by Pratham. Now this is what it actually is saying. Also, yes, the people from private schools have moved to government schools. One reason perhaps maybe because of COVID, lockdown and all, many people lost their jobs. So they want their son or children, daughter to be admitted in cheaper schools. Government fee is very less. तो schools पे fees less होता है. But दूसरी चीज देखा ये गया कि tuition actually has increased. The private tuition have got increased. So many people are not going to a school, so they have taken admission in government school and now they are going to private tuitions more. Because online classes हुआ, lockdown हुआ, तो शायद उतना अच्छे से class school में नहीं हो पा रहा होगा. So they decided to go for online education, private coachings and all, है ना. लेकिन एक चीज और देखा गया, द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स है ना टेकिंग पेड प्राइवेट ट्यूशंस इंक्रीज 26.4% से 30.5%. ठीक है. सो फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स नाउ द गवर्नमेंट स्कूल्स एनरोलमेंट इंक्रीज. सेकंड थिंग इज प्राइवेट ट्यूशन आल्सो इंक्रीज. ठीक है, द परसेंटेज. नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्चुअली है ना गवर्नमेंट स्कूल्स हैव सीन शार्प इंक्रीज है ना 65.6 से लेके 72.9% एडमिशन. बट दिस इज द प्रॉब्लम. The capability or outcome is not very effective. The percentage of children in class 3 in government or private school who were able to read the class 2 dropped from 27.3% from 20.5%. यानी class 3 के बच्चे, तो अगर class 2 का टेक्स्ट दिया गया पढ़ने के लिए तो वो सब बच्चे पढ़ नहीं पाए. पहले 27.3% लोग पढ़ पाते थे, अब 20% लोग के आसपास. ठीक है, अब देख रहे हो 20.5%. So if you are giving to a class 3 student a class 2 book, he or she must be able to read it. At least basic he should be able to clear. But only earlier there were 27.3% who could read it properly, but now it has even decreased to from 27.3% to 20.5%. आप समझ रहे हो. अब क्लास 3 का कोई बच्चा है, उसको क्लास 2 की बुक दोगे तो पढ़ लेना चाहिए ना उसको. बट पहले सिर्फ 27% बच्चे पढ़ पाते थे वहां, और अब और कम हो गया, 20% बच्चे पढ़ पाते हैं. Able to read the class 2. Okay, so it means it is a serious thing. Especially I think COVID की वजह से बहुत affected हुए हैं, the poor people and all. So that is I think perhaps the reason. Now let's move on further. Center alone cannot determine fake news, says Editors Guild. Okay. Now Editors Guild means editors body or the trade union of the union of editors of newspaper. Because recently this expressing concern over draft amendment made to an IT Act by Ministry of Information Technology, which empowers PIB to fact check and direct social media platform to take down fake contents. So Ministry of Electronics and Information Technology has directed PIB that wherever you find fake news, take it down. But Editors Guild have said this power should not only be given to PIB. ठीक है, सिर्फ PIB के पास ये पावर नहीं दिया जाना चाहिए. I mean others should be there, है ना. Determination of fake news cannot be in the sole hands of the government and will result in the censorship of the press. सिर्फ सरकार ही नहीं फाइन पकड़े कि कौन कौन फेक न्यूज है, बल्कि yes the other newspaper should have the power to actually expose कि these are the fake news and all, है ना. So that is what they have said it, है ना. This new procedure basically serves to make it easier to muzzle the free press. Muzzle मतलब होता है बात दबाना, to suppress voice and all. This is the word. So that is what Editors Guild have said कि अगर ऐसा होगा तो बाकी लोगों की वॉइस दबा दी जाएगी. That is what they have said. Okay, so that is what. So go and read it, है ना. एक और चीज ये, this is important on world page. This is an important news. Ukraine's interior minister among 15 dead in helicopter crash near Kyiv. So Kyiv, I hope you are aware. So let me show you because it is in the news. Here is India. This is Russia and this is Ukraine. So here is the capital. So near the capital, actually the helicopter got crashed. And because of which the interior minister died. Interior minister समझो like home minister है ना. So they use the word interior minister.
बट ऐसा कुछ कहा नहीं है कि देयर इज नो इमीडिएट कमेंट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन हैज नॉट मेड एनी रेफरेंस टू रशियन अटैक। तो यूक्रेन ने ये नहीं कहा कि रशिया ने अटैक किया और समथिंग लाइक दैट। तो अभी ये क्लियर नहीं है, बस हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया जिसमें कई सारे लोग, 15 लोग थे, उनकी डेथ हो गई। उसमें से एक जो थे वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, मिस्टर देनिस मोनास्टिर्स्की, ही ऑल्सो डाइड देयर। तो उनकी भी डेथ हो गई। इंटीरियर मिनिस्टर, या आप समझ लो वहां के होम मिनिस्टर एक तरह से उनकी। अभी तक ये यूक्रेन ने नहीं कहा है कि रशिया ने अटैक किया और समथिंग लाइक दैट, बस ये कहा गया कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया नियर कीव, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। इज इट क्लियर? So guys, one more thing is that we are providing a scholarship test. ठीक है, on 22nd January at 11 AM in the morning we'll be having a scholarship test. Scholarship test लेंगे। अगर आप पास कर गए इसमें, so you will get a scholarship in this course. 300 plus recorded video, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests are there. If you have any query, you can call on this number. इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो 9538895678 पर। ठीक है, and I have told you कि इफ यू वांट एक्चुअली स्कॉलरशिप, तो इस पर आप ये अटेम्प्ट करना 22 तारीख को। हाउ टू रजिस्टर, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर अगर आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, एंड डाउनलोड द BYJU'S एग्जाम प्रिपेयर। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।